नमस्ते, सलाम एंड स्वागत है आपका एक और नए चैप्टर में। और इस बार हम आ गए हैं यूट्यूब पे। ये है हमारा पहला एपिसोड ऑफ यूसीएल लाइव्स विद मौलवा जवाहर। यहाँ फुटबॉल का गरम मिलता है टैक्टिकल ज्ञान के साथ और बैंटर का बाजा बजता है फुल वॉल्यूम पे। मैं हूँ रितेश, आपका होस्ट। और मेरे साथ है मेरा को होस्ट, मेरा यार, फुटबॉल का चलता फिरता टैक्टिक्स बोर्ड, राहुल। राहुल, कैसे हैं आप? Very good, Ritesh. Happy to be here. Finally, we are kicking off फाइनली। अपना YouTube. So excited. फाइन। Remember जब शुरू में हम बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि दिसंबर में स्टार्ट करेंगे, जनवरी में स्टार्ट करेंगे, पर कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आ गया था. I'm really happy about that. Finally, we are here. नॉट उसके श्योर साथ कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, बट या वी आर हियर वी आर हियर ऑन द यूट्यूब। वो सो लेट्स सी टाइम हाउ दिस थिंग। वो टाइम बताएगा. और दूसरी बात, आर्सेनल जीती आज 3-0, तो that makes us even more happier. 3-0. डेफिनेटली डेफिनेटली। Yeah, yeah. बट या आज हम बात करने वाले हैं एक प्रीव्यू मैच की, जो सिर्फ एक ग्रुप स्टेज नहीं बट प्रॉपर्ली एक स्टेटमेंट बनने वाला है। स्पेशली जब बात होगी एथलेटिक बिलबाओ वर्सेस आर्सेनल की, सैन मैमेस स्टेडियम में। बिलबाओ अपने होम फोर्ट्रेस पर रेडी है, राइट? एंड आर्सेनल अपने यूरोपियन रिडेम्पशन आर्क को मिशन पे निकल चुका है कि भाई इस बार तो फोड़ के आना है। लास्ट टाइम थोड़ा मिस हो गए थे, पर प्रोबेबली इस बार शायद थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करेंगे। आर्टेटा का मिडफील्ड एक्सपेरिमेंट्स होगा या बिलबाओ का प्रेसिंग गेम और सैन मैमेस का क्राउड, सब कुछ मिलकर बनाने वाले हैं बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर मैच। क्या आर्सेनल अपना यूसीएल कैंपेन शान से शुरू करेगा या बास फायर में जल जाएगा? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में, लेकिन पहले लेट्स टॉक अबाउट आर्सेनल्स लास्ट मैच। आर्सेनल 3, नॉटिंघम फॉरेस्ट 0। भाई क्या मैच था राहुल। क्या मैच था भाई. लाइनअप इज देयर ऑन द स्क्रीन फॉर यू नाउ. मजा आ गया. डेफिनेटली। फुल कंट्रोल, मतलब अगेंस्ट अ टीम लाइक फॉरेस्ट पूरा कंट्रोल दिखाया है. वी डोंट सी दैट यूजुअली. एंड आई प्ले एफपीएल, यू डोंट. मतलब आई मेरे को लग नहीं रहा था. मैंने कितने पॉइंट्स मिले? पॉइंट्स कितने अच्छे पॉइंट्स हैं. दिए आर्सेनल ने? आर्सेनल का मैंने कोई प्लेयर रखा ही नहीं ना, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था भाई कि वी माइट फक दिस अप. मैंने तभी तो बोल रहा हूँ, मैंने रखा ही नहीं. But राइट so राइट happy. राइट। क्या full control चला गेम में. Forest, as you guys can see, rating wise भी, they were not in the game. Arsenal dominated it throughout, which was so good to see. डेफिनेटली डेफिनेटली। पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 5 नए डेब्यूटेंट्स थे। लाइक Hmm. इट डिडंट फील लाइक वी हैव सो मेनी डेब्यूटेंट्स प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर। इट Yep. रियली डिडंट And फील लाइक। और अभी हम बात कर रहे थे मैच से पहले कि सलीबा की प्रेजेंस और एब्सेंस का कुछ मतलब ही नहीं रहा। लाइक क्रिस्टियन मॉस्केरास ऐसे आया जैसे पिछले 15 साल से यहीं खेल रहा होगा। भाई Mosquera both games. और पता है, he's Christian. वो मैंने चेक किया. क्रिस्टियन। क्रिस्टियन है वो, क्रिस्टियन नहीं, वो क्रिस्टियन है. क्रिस्टी। क्रिस्थी, मतलब CRISTH ऐसे करके उल्टा है उसका थोड़ा. ओके बट ओके लिटरली द ओके। वे ही प्लेस, वो लगता भी नहीं भाई कि ही डजंट लुक लाइक अ 21-year-old. वो पूरा प्रॉपर मैच्योर परफॉर्मेंस देता है. 25 26 27 साल का डिफेंडर होगा. मैंने एक दो चीजें हाउएवर देखी थी, वेयर जब बॉल एयर में होती है ना, जब स्ट्राइकर, जैसे वुड, एक दो बार ऐसा हुआ आज के गेम में, जब बॉल एयर में होती है एंड ही हैज टू हेड द बॉल, ही इज कंपीटिंग विद वुड फॉर इट, वहां पे ही सीम्स काइंड ऑफ इनकॉन्फिडेंट. उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, ओके। और लाइक थोड़ा डर दिखता है उसके अंदर. एंड मे बी दैट्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस और समथिंग. पर मैंने एक दो बार देखा, यूजुअली ही इज गुड, बट एक दो बार मैंने वो फील किया. Yeah, मतलब even his previous match when he played against Liverpool, starting में थोड़े दो चार wayward passes थे, but he even eventually grew up into the game, right? Yep. It's not like I personally don't feel like कि अगर उसकी जगह पे याकूब किवियोर भी होता ना, तो I think वो शायद ज्यादा मिस्टेक्स करता. नहीं, I ओ ही personally believe मॉस्केरा इज बेटर देन किवियोर. ये तो definitely, 100%. and we have upgraded this summer very well. And let's Yep. look at the squad that we have right now. We will switch to the substitutes surely, but यार परफॉर्मेंसेस देखो आप इनकी, जुबिमेंडी, मॉस्केरा, एजे, Yep. मदुएके, विक्टर ग्योकेरेस। एक एक भाई मेरे को डाउट you लगा था जब when we saw, and me personally, भाई Rice, I could never see him getting benched. So yeah that was yeah, kind of for me कि wow भाई Rice नहीं. But then we were 3-0 up. but that's the Rice, luxury that we have right wait, now. wait. That's the We were luxury that we 3-0 have up right now. और Rice was still not on the field, and I was like wow भाई क्या luxury है Rice जैसे player को. We're able to bench and still win 3-0. And Exactly. literally, And like what you mentioned, पांच, I wouldn't call them debutants because they have played before, but yeah, of course. पर नए प्लेयर हैं जो इसी विंडो में आए हैं. एंड इट Mhm. ऐसा लगा ही नहीं भाई, लाइक वी जो हमारा स्पॉटिफाई में पॉडकास्ट चल रहा है,
we've been talking about लिवरपूल की नए प्लेयर्स हैं, चेल्सी नए प्लेयर्स हैं, Yep. सिटी नए प्लेयर्स हैं, भाई आर्सेनल में भी तो नए प्लेयर्स हैं. Why did we not suffer like that today? That was so good to see. इतना disrespect चलता आर्टेटा का, पर भाई आज का performance, that it is kind of a statement It was a against a kind of a team like statement. Forest especially. And let's just talk about the Arsenal squad a bit more. You know, Hmm? we have seen 5 new faces working together for the very first time. Yep. और by the way, लगे नहीं कि पहली बार खेल रहे हैं एक साथ, Hmm. ठीक है. लगे यार विक्टर ग्योकेरेस को भी गोल मिल ही गया. जुबिमेंडी भाई क्या प्लेयर है. What a भाई gem भाई. I love him. I love yep this guy. yep ठीक है. मतलब हमने बात कर रहे थे एक दो एपिसोड पहले कि एवरेजी एज ए लाइक वाओ क्या बंदा है. डोपामिन लेवल्स ऑन डिफरेंट लाइफ ऑन अ डिफरेंट हाई. But yep when you see Zubimendi playing for the Arsenal, उस सॉरी उस बंदे ने वो काम किया है जो उसने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं किया. एक ही मैच में गोल 2 तो गोल नहीं मारे, है. Yeah, ठीक है. फिर उसी 2 गोल में पहली बार आउट ऑफ द बॉक्स मारना out of the और box. पहली बार First goal. हेडर गोल करना. Yep. And that's something that you only do when you play Yep. for Arsenal, Yep. right? Yeah, उसका celebration देखा था दूसरा वाला, like after he scored the goal, he was running towards the goal. He's like, and I was like, he's like, oh, सर से भी गोल मार सकता हूँ मैं. That was like, Right, so right, he right. overall he had such a good night, and also yeah, he got the man of the match, so that was Yeah, great. And literally, that's not something you expect from Zubimendi. Like उसका वो था कि definitely. पीछे से build up बनाएगा, but when you chip in with goals like that, it's a bonus. और literally अभी देखो ना 4 ही गेम हुए सीजन के, एक मैच में वो कैलाफियोरी, दूसरे में टिम्बर, Zubimendi. It's literally we've got these players who we don't even expect to score. They're just Yeah, chipping yeah. in and making it easier for other players. And ये Arteta. बहुत अच्छी बात भी है because when a player of when you buy a high price players like Victor Gyökeres, Madueke, Eze, उनके ऊपर थोड़ा सा burden कम हो जाता है. हाँ, Like वही. they don't feel the burden of scoring or assisting every single match Yep. because now you got support from other players also. Zubimendi, Calafiori, Timber ने 2 हेडर मारे हैं भाई. हाँ, Timber. किसने सोचा था कि टिम्बर मारेगा. टिम्बर वही. इज बाय द वे इज द शॉर्टेस्ट प्लेयर दैट वी हैव. One of the Not short. the shortest, one of the One of the shortest, right? And he's scoring headers. Hmm. Same goes for Zubimendi. He's scoring headers. So I don't know what that is, but I think especially for us attacking lineup, उनके ऊपर थोड़ा बर्डन कम हुआ है, which is it's और a blessing, मतलब I would say. we have kind of seen that in the past too. जो आर्टेटा का स्क्वाड है, goals usually shared होते हैं. Every Definitely. lots of players contribute. तो वही Yep, ट्रेंड yep. कंटिन्यू आ रहा है. Like last season, right? I think 3 players each had 10 या 11 गोल. तो और 10 ही 11, like imagine, right? A club like Arsenal finished second in the league, reached the semi-finals, और फिर Yeah. भी 11 मैक्सिमम गोल है एक प्लेयर के. तो I that guess just इसी shows वजह how. से I guess Arteta was shying away from buying a proper number 9. He's like, अरे बाकी लोग मार देंगे गोल, क्या दिक्कत है. नहीं, we needed a number 9 और उस तक फाइनली लिया है. तो I wouldn't say कि नहीं, he was shying away. I Yeah, wouldn't say but that. I don't know, like what's that was, but ठीक है, that was in the past. Let's look at the depth that we have. Like my Yeah, God, and like डेप्थ की जो बात like कर रहे हैं, and you mentioned before कि लग नहीं रहा था 5 नए प्लेयर है. We didn't have Saka. Odegaard, no, he went off. Like 18th minute पे very शायद he went off. very फिर early. से Yeah, shoulder injury कुछ हो गया है. We didn't have Saliba. Mosquera filled in so nicely. So that's really good to see. Depth wise, I think we have one of the best squads we are this season. stacked. We are stacked, and definitely we don't have any reason not to do well this season in any of the tournaments. Because Yep. हम ये बाद में नहीं आ सकते राइवल्स में बात, भाई हमारे तो डेप्थ ही नहीं है, हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है, हम यंगस्टर्स को कैसे खिला दें. नहीं भाई, you can't say this right now. We don't have. You've got Yep. Gabriel Martinelli, Leonard Trossard, Declan Rice, MLS, Ethan Neri, Kepa. Bhai, Kepa, you got Kepa for 5 million. I still can't believe that. But then again, you've got Ben White. फिर आते हैं Piero Hincapié. हाँ, Another. एक मेरे को वो थोड़ा सा लगा था. गेम एंड होने वाला था. It was 85th minute or something. आर्टेटा हाँ, का कैमरा इसको फोकस भी हुआ. दे दो. पीछे हिनकैपी बैठा है और मैं उसको देख रहा था. मैं यार, I wish he also came on. दे दो. Nice. Right, पर right, right. वहाँ पे वही बात आ जाती. Who क्योंकि लूज के लिए came on for Calafiori. हिनकैपी क्या उसको तुम गैब्रियल का डॉग खिलाओगे? तो maybe हाँ, that मतलब was we the thing. and it's not like it's the end of the season, right? You've got like Yeah. plenty No, of games coming ahead, Yep. and of course we are pretty sure जिस तरीके से players गिर रहे हैं, just like a deck of cards. बहुत Every इंजरीज हो रही है single भाई. match, every single match we see a player getting injured. Every single match we are getting player,
थोड़ा सा निगल हो गया है, वार्म अप में किसी की टांग टूट रही है, एंकल ट्विस्ट हो रहे हैं, तो I'm pretty sure Piero is going to play for Arsenal, at least start for Arsenal. So Yep. let's see. And then at the very end, we have Max Dauman. Now, the हमने people who बैठा have है never heard of this guy, they will like 15 साल का लड़का है, क्या ही कर लेगा भाई? उनसे पूछो who is facing this person. लास्ट मैच में किया ना उसने जब वो पेनल्टी Exactly. उसने उतना किया जितना जितना हम मार्टिनेली वगैरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्टिनेली ट्रोसार्ड के से तो आप एक्सपेक्ट आज कर का भी रहे देखो थे. ना, लाइक आई डोंट फुली ट्रस्ट सोफा स्कोर व्हेन इट कम्स टू रेटिंग्स, पर No. लिटरली वो आया बेंच से, हिम एंड ट्रोसार्ड केम ऑन एट द सेम टाइम, Yeah, ट्रोसार्ड ने yeah. असिस्ट दिया, मार्टिनेली प्लेड ऑन द राइट, क्या किया उसने? वो बस ऊंची देखी दुन 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 वाला ट्रिपल, लाइक दैट्स ऑल ही डज, मैं आई डोंट तभी सी तो हिम डू एनीथिंग एल्स. मैं इसलिए कहता हूँ इज अ हेडलेस चिकन. ही जस्ट ओनली नोस बॉल से देखो, भागो, देखी जाएगी. को टकराएगा तो देख, टकराएगा पर टकराएगा. आई एम हैप्पी अब रिप्लेसमेंट आया, और भाई नॉनी व्हाट अ परफॉर्मेंस. नॉनी बाय द वे, नॉनी को डिस्कस करते हैं आगे, आई एम नॉट गोइंग टू जंप Definitely. अहेड. He needs to be discussed, या especially from me. तो चल, आई एम गोइंग टू मूव द ग्राफिक ऑन. लेट्स Yeah, yeah. focus on Zubimendi, man of the match today. What a Bhai, performance from him. bhai, this guy. Two Like, goals. I am like pretty sure हमने जो विंटर मार्केट में इसके लिए जो फाउंडेशंस क्रिएट करी थी ना, Hmm. इट्स पेइंग एवरी सिंगल पेनी वर्थ. Yep. Every single time that we have flown through Spain to talk to Martin, उसके उसके कुत्ते से, उसकी वाइफ से, उसके डैड से, उसके बार्बर से, जिससे ही बात करी होगी, आई एम प्रीटी श्योर एवरी सिंगल पेनी इज वर्थ हैविंग हिम इनटू द लाइनअप. Yep. Yep. मस्त. अभी मैंने बोला सुपर स्कोर का रेटिंग मेरे को पसंद नहीं है, पर मस्त 9.2 दिया है. एक्सी देखो ओनली भाई 0.16. वर्थ इट है भाई, एक्सी देखो ओनली वर्थ 0.16. Scoring 2 goals out of that. That first इट. goal, that first goal, I think it was 0.02 XG or something. Like it was not Yeah. supposed to be a goal, पर क्या फिनिश था भाई. No. And at one point I thought कि वो डिफ्लेक्ट हुआ, पर नहीं भाई, प्रॉपर जूम, क्या बॉल ट्रैवल करी वो. Exactly. कीपर मुझे मुझे फर्स्ट टाइम पे यही लगा कि उसने मारा तो मारा, शायद किसी का डिफ्लेक्ट हुआ होगा, सर से लगा होगा, कुछ तो हुआ होगा. बट व्हेन यू सी द रीप्ले, द कर्व दैट इट हैड, ओ माय गॉड, डिडंट लुक so लाइक it was so मार्टिन good. जुबिमेंडी, डिड लुक लाइक रॉड्री मार रहा है गोल भाई. Rodri, who's Rodri? Rodri कौन है भाई? I don't know था कोई Rodri. पास्ट I don't पास्ट know में any कोई था, Rodri. मतलब प्रॉब्लली, आई डोंट नो. कौन है Rodri? आई गेस. But literally, if you एनीवे, look at the touches, 49 touches, defensive midfielder है अपना. Obviously, he's going to get so many touches, and डेफिनेटली. passes तो like he helped us gain control today. At the same time, he also scored 2 goals. Easy 3 लिटरली goals बनाया. ऑर्केस्ट्रेट एवरीथिंग फ्रॉम द मिडफील्ड. Yep. सब कुछ चलाता है मिडफील्ड से लौंडा. Yep. Yep. But one thing I've noticed this कि like initially, like before the season started, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये proper एक pivot रहेगा, and then we'll have 2 midfielders, तो center midfielders who will play, जिनको थोड़ा open role मिल जाएगा. But I don't see that. I see now is कि he needs someone to anchor with him. वो solo नहीं कर पाता. Sometimes it's अच्छा, Rice, इसके today इसके it was Marino. हाँ, आई वाज अबाउट टू से दिस, लाइक I don't know it's out of context or whatnot, but तुम्हें क्या लगता है, from personal perspective, from as a fan or whatever analyst, because आप हो, चलते फिरते टेक्निकल बोर्ड, मेरिनो के लिए बेस्ट पार्टनर कौन है? टेक्लन राइस, सॉरी मैं सेड मेरिनो, व्हाई द फक आई सेड मेरिनो, प्रॉब्ली इसके लास्ट हैट्रिक मैच देखी शायद इसलिए दिमाग चल रहा है. बट या जुबिमेंडी के लिए उसका बेस्ट पार्टनर कौन होगा? मिकेल मेरिनो या फिर हमारा अपना पुराना पुराना चावल टेक्लन राइस? You don't bench Rice, like you don't. Marino, I think what happened today was Marino got his start क्योंकि अभी हैट्रिक मारी है, and Marino deserves a place in the team too. He is that good. बस वही बात है कि कंपटीशन उसका इतना स्ट्रांग है, राइस से हाँ, खिलाए. कंपटीशन है, तो it's just hard for him to get in the team, and I think he deserved to start today just because of that performance. और like you wouldn't bench Zubimendi क्योंकि उसका अपना रोल है, और and I think राइस है और उसका वो अपना चल रहा है अब. And what I really love about it is that राइस को मस्त अपना वो मिला, रेस्ट मिल गया. नेक्स्ट गेम वी प्ले चैंपियंस लीग, आफ्टर दैट वी हैव सिटी. तो I I don't think think I think I don't मेरे think लिए या कंटिन्यू. I don't think Marino starts those games. Maybe Champions League, but City वाला तो गेम तो राइस को ही मिलना है. And आज Arteta had the opportunity to rotate the squad थोड़ा, राइस को बिठाया, brought on started Marino, and Marino would be happy too now, right? वो ऐसा नहीं बोलेगा 4 गेम के बाद कि यार मेरे को तो खेलने को नहीं मिल रहा है, and that in हाँ, he can't January sulk. he's like कि भाई नहीं, you're not giving me any game time,
I'm going. Yeah, क्योंकि yeah, think about that too. Next year it's World Cup. If Marino doesn't yeah. play at all, he's not going to get to play for Spain. He's not So, going to be very happy. so good rotation. I like good rotation by Arteta. Could have gone bad because Rice नहीं खेले तो Nottingham like Rice Forest. is so important Yeah, for but him. yeah, we have to figure out. We have also need to consider the fact that we are playing Nottingham Forest. It's not like you're playing some relegation or That's what I about mean. weekend relegated So teams. it worked out. So that's what It football worked को out. ये ना you try things. Sometimes they work, sometimes they don't. Today it worked out. बट So मुझे पर्सनली पता क्या लगता है, लाइक आई पर्सनली फील डेक्लन राइस को इसलिए नहीं खिलाया बिकॉज वी आर गोइंग टू प्ले यूसीएल नाइट्स. yeah, अपना पहला मैच आने वाला है. आई थिंक ही वांट्स टू सेव हिम. ऑफ yeah, कोर्स and आई एम प्रीटी अलाइंड विद द फैक्ट कि हाँ, सिटी में तो वो खेलेगा हाँ वो बिकॉज 100%. सिटी फॉर सिटी लाइक दैट्स में लाइक नॉट फिर इवन अ हराम बॉल क्वेश्चन. आ जाएगा वापस. हराम बॉल में तो we need नहीं rice. यार, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा. वो नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड. लाइक no, आई no, एम no. स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड विद द लिवरपूल्स परफॉर्मेंस. Well, Arsenal's performance in Liverpool's match, Yeah, yeah. but you get my stride. Mhm. But yeah, like मेरे हिसाब से राइस को इसलिए बैठाया गया because they want him a fresh midfielder to play alongside Roberto Zubimendi because अब उसका रोल बहुत चेंज हो गया है. Yep. ठीक है. Now he will get more freedom because of Zubimendi because he can be the diagonal pass person. Yep. Anyway, चलो let's move on. Let's move on to अपना Yeah. दूसरा गोल स्कोरर Victor Gyökeres. Of course. भाई, ये Brother got his celebration goal. iconic है भाई. Brother got his goal Even the today. guy is doing celebration even after eating a tap in. My God. अब वो तो गोल है यार. He did it after गोल a तो गोल है. penalty. He did it after a penalty. तो इसमें क्यों नहीं करेगा यार? But of course, but like what I like the most about Victor Gyökeres, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे before the recording started, that he's a player who thrives on confidence. Right? The moment he scored that goal, उसका दूसरा शॉट hit the crossbar, जो overlapping run बना के उसने स्कोर किया, not score Yep. किया, but about to score. And That is something Yep. that we want him to do it and eventually he every single time. himself he set up that overlap. That is true. Who was the one he was the one he carried the ball from the left hand side. पूरा आगे Exactly. उसके अंदर कैरी किया, नॉनी को पास दिया, नॉनी ने मस्त होल्ड किया. Then he did that overlap around him, around Noni passed it to him. Yeah. First time shot मारा, boom, बार पे लगा, थोड़ा outside. But Mhm. if that went in, भाई क्या गोल होता. मजा आया Literally था. दो गोल ऑफ द सीजन कंटेंडर होते हैं हमारे एक ही गेम में. क्या Definitely, बस definitely. वो खुश नहीं. But- But we saw shot power है भाई पे. क्या shot power है भाई. भाई बहुत. और that too रिएक्शन टाइम देखा आपने, लाइक द मोमेंट, और उसको क्योंकि उसको इतना स्पेस नहीं मिला कि अपना पांव पीछे ट्रैक करके फिर मारे अच्छे. द मोमेंट ही गॉट द बॉल इन हिज फीट, ही शूट इट. एंड भाई वो अभी तक हिल रहा होगा. आई कैन टेल यू दैट. इतनी पावर से मारा भाई ने. Yep. बट या आई ट्रूली he needs to do this like more often. Yep. And More remember the वो जो penalty थी against Leeds, उसमें भी same shot power. तो finishing shot power वो सब बहुत अच्छा है. He has But it. he has that different थोड़ा gameplay I think from what we expected of him. Like he's not वो acceleration नहीं है. And I've said this before too. He's like a truck. शुरू में नहीं भागता, पर एक बार भागेगा तो तुम रोक नहीं सकते. And इंजन literally गरम that's करो what we- इसका. Say that again. इसका इंजन गरम करना पड़ेगा. हाँ, चार्जेस इंजन की गरम होने में थोड़ा जिम्मेदारी टाइम लगता है, ऐसे पर को एक बार- लेनी पड़ेगी. एक बार गर्म हो जाए तो you can't stop him. Like he's going to You can't ram stop. into you, he's going to hit you. बस एक बार ही वो Right, थोड़ा right. acceleration की बात है. मैं पता नहीं ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. ठीक है, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, फिंगर्स क्रॉस्ड. लेकिन लास्ट सीजन से आपने देखा होगा, आर्सेनल वाज नॉट डूइंग दैट फ्री फ्लोइंग फुटबॉल इन प्रीमियर लीग. लेकिन चैंपियंस लीग में दे वर डूइंग दैट एग्जैक्ट थिंग, एटलीस्ट लाइक बिफोर द मैड्रिड मैच. पूरा फ्री फ्लोइंग चल रहा है, साका पास कर रहा है, ओवरलैपिंग पासेस चल रहे हैं, रन्स चल रहे हैं, एंड ऑल दैट. एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बेनिफिट विक्टर योकेरेस. Oh yeah. बिकॉज अगर फ्री फ्लोइंग फुटबॉल चल रही है, players are creating passes, players are creating what should I say, runs around him, he will get the space to make a shot. And I think that's something that we want to see more often. Yeah. And moving on from Victor Gyökeres to the next most important player. No need Madueke. No, we need Madueke. Oh, we need हो गया ये. No need से we need हो गया ये. I told you before the season started. Like so many Arsenal fans, including you, were like shutting him down. Yeah. Nah, I agree. Why are we signing him 60 million, 55 million? I told you he's good. वो Chelsea club दिखा रहा है भाई. Chelsea club दिखा रहा है.
I told you he's good, and you're seeing that now. क्या Yeah, डायरेक्ट of प्लेयर है, क्या course. ड्रिबल्स भाई देख, करता है भाई, मजा. एंड लाइक इवन लाइक उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता. ही लूजेस दैट ड्रिबल, ही नहीं, डजंट केयर, ही ट्राई इट अगेन. वो फिर हारेगा, ही ट्राई इट अगेन. एंड आई थिंक and that's वही that's the one मार्टिनेली of the best trait that he has. वही थोड़ा मार्टिनेली में डाउन हो गया है. आई थिंक मार्टिनेली is another player I think who tries some confidence और वो returns नहीं आ रहे हैं, and that's why I think he is suffering. But नॉनी का चल रहा है. He doesn't care. He'll run at you again and again and again. He won't stop. Like you look at the dribble attempts, 8 dribble attempts. एग्जैक्टली मैं ये बोलने वाला था, उसके ड्रिबल But अटेम्प्ट देखो, वो रुक नहीं रहा बंदा, वो रुक गया, ठुक गया, कोई बात नहीं, दोबारा चलाएंगे, he'll go again. रुक गया, फिर दोबारा चलाएंगे. वो हम बचपन में कहानी नहीं पढ़ते थे, चीटी वाली, दीवार पे चढ़ती है, एक बार चढ़ती है, गिर जाती है, फिर दोबारा चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर दोबारा चढ़ती है, और इवेंचुअली पार कर जाती है. ही इज लाइक दैट, एंड he He is has made that. non-stop. And मतलब कमाल की बात ये थी, जो प्रीवियस मैच हुआ था लिवरपूल का, उसमें भी he was the best player yep, for 2 games in a row the now. Arsenal squad, and he carried on that confidence. Yep. And because confidence is key, is a general saying है, but I guess in football, in sports, this is true. अब विक्टर योकेरेस को देख लो, अब नॉनी को देख लो, right? Many fans, including me, was not, I won't say we were not happy. We were that we are meaning science and whatnot, but the amount of money that we have spent on him, we were like, यार इसमें तो जावी शिमस आ जाता, इसमें तो रफाल लिया आ जाता. अच्छा एक सेकंड 4 मैच हुए ना सीजन के. आज आप क्या बोलते हो, इज ही वर्थ दैट मनी और नॉट? I think he is worth that money, especially. साका का पोजीशन है वो, जो साका ने 4 साल से I अपना know, बना I रखा know, है. I know, I This know, guy I comes know. in, we don't have Saka, we don't miss Saka. Suddenly we don't miss We are Saka. not suddenly. Last season, And I remember guess when Saka wasn't there, we were suffering so bad. We were suffering so bad. इस साल Saka gets injured. शुरू में we don't even care he's not there. He is so good. मतलब the only bad thing I found in him is वो you don't know कब क्रॉस करेगा कब नहीं करेगा. हाँ, वो थोड़ा सा वो है. और like it's kind of good कि opponents के against वो अच्छा है क्योंकि he is unpredictable. But I think उधर थोड़ा अपनी टीम भी सफर कर जाती है क्योंकि even our team doesn't know because हमें भी नहीं कब पता ना आएगी, कि कब क्रॉस करने वाला है. कब आएगी. वेट कर रहे हैं कब आएगी. कभी कभी फर्स्ट में आ जाएगी, कभी कभी he'll go back forth. तो बट I think वो थोड़ा सा, अब वो जितना ज्यादा मैच खेलेगा अपने स्क्वाड के साथ, Yep. he would get to know कि okay, रन्स बन रहे हैं, I need to take a shot. Yep. Irrespective of whether I have a free space or not, रन्स बन रहे हैं, मारो, फेंको, निकालो. Yep. Do everything that needs to be done. But yes, Noni Madueke, no, we need Madueke right now, especially when Saka is not there. Saka कितनी कमाल की बात है ना यार. Last season we were so much dependent on Saka, we were so much dependent on Saliba, we were so much dependent on Declan Rice. अभी no one played. Yeah. No one played. easy 3-0 भाई, कभी डर ही नहीं लगा पूरे मैच में. हाँ, और भाई there was the new manager bounce, by the way. यार वो ऑन है यार. He does things in his second, he wins trophies in his second season. अभी पहला ही मैच था तो. अच्छा ये by the way ये second season like continue हुआ या फिर ये भी नॉटिंघम का first season है? ये नॉटिंघम फर्स्ट सीजन है. तो I guess इसमें भी जीतने वाले नहीं है वो. ना, Nottingham anyway doesn't win a lot. I literally, I don't, if we're going to discuss him, I don't fully agree with ये signing. तुम नूनो को हटा के ऑन्स लाए हो because ऑन्स का play style is so different than Nuno's play style. Nuno वो defense first वाला बंदा है, ऑन्स attack first वाला बंदा है. You don't have the players. Totally different. हाँ, you don't have the players. So what I hope, because I like ऑन्स, I hope he doesn't do an Amorim कि अपने सिस्टम प्लेयर्स को फिट कर रहा है. He rather thinks, uses his brain, and फॉरेस्ट का जो सिस्टम सेट है उसमें भाई कंटिन्यू कर. 2-4 विंडो अगर तू तब तक रुकता है उतना लंबा, एडू है उसके पास, देखते हैं उसका क्या चलता है एडू के साथ. 2-4 विंडो अपना रुक, साइन योर प्लेयर्स एंड देन चेंज योर स्टाइल. Because if he plays that football, Spurs वाला football with these players, Spurs are going to suffer and he's going to get the sack. Yeah. So he has to be careful there. And this time he will get sacked even after not even winning a trophy because he doesn't have the players. वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यार. कब तक चलाएगा वो रिकॉर्ड? वो कोट, गुड नहीं. that quote was cold and he proved it too, पर वो कब तक रहेगा यार? Yeah, but yeah, like, but
But Edu Gaspar, I think he is sort of a sporting director who will support his manager. हमने देखा है उसको आर्सेनल में. When Arsenal wanted players, he delivered. I don't think that about him. Not, See, नहीं, see, I'm not see. saying. See, I'm not saying कि he's going to deliver the same amount of players, same level of players, but he's like, okay, you need players. यार ठीक है. बर्ता एक विंडो में बार्गेन जो करके कर आता गया हूँ. ना, बर्ता नहीं, एक विंडो में कर गया यार. जो Edu was there for 4 years or something, 5 I 5 understand, years. but you need to understand that Edu Gaspar is now sporting director of Nottingham Forest, not Arsenal. Right? He's not just, it's Level. not just Forest. Literally उसके 3 क्लब है, वो जो ग्रीक ओनर है उनका, तीनों क्लब्स का डायरेक्टर है, हाँ. स्पोर्टिंग डायरेक्टर. Yeah. तीनों क्लब्स का है, तो great for him. But 3-0 हार मिली आज. They showed him on the camera too, जो गेम चल रहा था. He's out. I don't care about him. I've forgotten him. By the way, टॉपिक क्या था? UCL Knights. Can we move? UCL Knights, sorry, but यार क्या करें आप, इतना अच्छा मैच हुआ था आर्सेनल का. We have to talk about it. Yeah. We like it's literally what? Yeah. 2 a.m. 2 a.m. in India, and I just can't sleep without talking about Arsenal and their performance against Yep. Nottingham Forest. So yeah, that has to be said. Yeah, let's move on. Let's move on. Rahul. अच्छा भाई, UCL Knights. You know, मैच से पहले ना, जब मैच से पहले I didn't know कि कब स्टार्ट हो रहा है. मेरे को लगा था 30 सितंबर, like probably another 3 weeks. That's when UCL starts. Then in the match, the commentators mentioned Tuesday को UCL है. Then I quickly Google search में, अबे आ भी गया, बहुत जल्दी आ गया. But भाई I guess वो extended group stages की वजह से they have to start a bit early, right? Yeah. But I guess good for the fans, good for the viewerships, but sad for the players. They have to play more games, more injuries, more fatigue. Yeah. But I guess that's where the depth of the squad will be tested. And Arsenal, again, I'm going to say it again, they don't have any excuse. They don't have any excuse, mind you. So yeah, this is draw को देखते हुए तो we should be winning at least 7 of these 8 games. Like I am kind of worried about 3 games ही जो मेरे को hard दिख रहे हैं. Bayern Munich. हाँ, एक अलमाती होगा, एक स्लाविया पराग. We're not Manchester United, please. We're not Manchester United. Why do we always talk about United? I just don't get it, man. So 3 games. I see 3 games. Yeah. जो थोड़े hard है. It's Bayern Munich, Inter, Atletico. But Bayern and Atletico are at home. We are a really good team at home. तो and I don't like कंपानी का, तो मेरे को समझ नहीं आता वो बायर्न में he loses most of his big games. थोड़ा बस मेरे को इंटर से थोड़ा डर है, क्योंकि in the end again we'll see Arteta. He'll go away, San Siro, park the bus, play some haram ball, corner से गोल मार लेंगे. In that attempt we might win, we might draw, we might lose. मेरे को उस गेम के अलावा I see us winning all the others. But यार last season आप देखो UCL matches में, like Arsenal, I guess I don't even remember even a single match जहाँ पे वो they have literally parked the bus, they have scored goals, and then they're like, okay, now we want to defend our lead. That's why we are bringing players. Remember the Inter game last year? वो हराम बॉल वो गेम हुआ था दोनों साइड पर, वो भी एक साइड ही, क्योंकि लास्ट सीजन but that was deserving, no, that was deserving because Inter was also not coming. ठीक है, हमारे पे अटैक नहीं आना चाहते, तो by the fuck we are going to lose our shit, right? That game end 2-2 or something. That game probably, like, we need to check it out. Oh no, we lost the game. Yes, we lost only one game. We lost only one game last year UCL में, and in the group stage, and that was against Inter. That's why we इससे आर्टेटा को क्या सीख मिलती है? हराम बॉल से हरामी लोग खेलते हैं, हम नहीं. ठीक है, अरे आर्टेटा हरामी है. Let's not do that. Let's not do that. He is harami. He will not change that. He is going to play haram ball. I'm tired of it. I'm tired of I'll this come haram back ball. to the game today. I'll come back to the game today. You take off Gyökeres, great. Yeah. You put Marino as striker to DM, to फिर से वो box to box अपने defensive kind of midfielder. I think that's safe, right? That's safe. You have already scored 3 goals, right? And you want to save your proven number score 9. 5, score 6. Right? What if Gyökeres got injured? You're going to start. No, I agree with that. I agree with taking him off. I don't mind that. But I don't think we had a lot of. We don't even have that, ना? अब या तो Max Dauman को खिलाते. हाँ नहीं, we didn't have the option. We can't do that. Like maybe
maybe Trossard striker बन के Dauman comes But on. वही है ना, now wouldn't you want a hat trick back player to start up front rather than Yeah, Trossard? the point is Arteta को जब मौका मिलता है हराम बॉल का वो खेलता है. वो खेलेगा. That's the point. So in this Got looking it. at these Let's talk about ये it, Raz. आठ जो Let's talk गेम है about ना, it, ये Raz. जो 8 गेम है, Yeah, सबसे ऊपर जो yeah. बायर्न म्यूनिख पड़ा है, ये उसके बाद इंटर है, फिर एटलेटिको है, ये पोटेंशियली हराम बॉल गेम्स है. Other games he'll dominate, he'll win them, मस्त 3-4 गोल But मारेगा वो, he'll play free flowing I football, पर Hmm. इधर वो हराम बॉल डालेगा. और यार that'll मुझे be his लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उसे हराम बॉल खेलनी चाहिए एट इंटर बिकॉज इट्स अवे. ठीक है, वी आर रियली गुड एट होम. बायर्न एटलेटिको आर एट होम. आई थिंक वी शुड प्ले गुड. मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि यार we didn't have creative players back then when we were playing even against Inter Milan last time when we faced them, and in the previous match against Liverpool. They didn't have a lot of creative players. We do, like on the bench, they were sitting, warming up. For whatever reason, he didn't want to bring them up earlier. But yeah, so yeah, this is the list, viewers. Bayern, Inter Milan, Atletico Madrid, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Prague और कजाकिस्तान की पहली टीम कायरत अलमाती, जो प्रोबेबली हम शायद पहली बार खेल रहे होंगे उनके साथ. And then we've got Atletico Bilbao Club. The very first match is against them. Yep. Let's talk a bit more about Atletico Bilbao. I think they lost their recent match again against they played today, just Deportivo, today. right? Arsenal का match was, for me, it was at 8:30 a.m. Bilbao was at 1:30 p.m. and they lost 1-0. थोड़ा सा रोटेशन था. Deportivo always, yeah. हाँ, थोड़ा लाइनअप में थोड़ा सा रोटेशन था. This is the lineup that they played, but I mean maybe वो थोड़ा UCL का वो होगा दिमाग में. But they're doing pretty good though. They're doing pretty good. They're third on the table in La Liga right They now. are there. Even the last match that they lost was an own goal. So it's not like कि सामने वाली टीम ने बहुत ज्यादा ही प्रेशर क्रिएट कर दिया है. Yeah. Well, कि यही होगा जो own goal मारा है. But it's not like they were really onto their defense. Yep. So yeah, And we might see a good matchup against at least for the very first match. It's a good thing. We are playing Atletico Club, match not good होगा Bayern for us, bad होगा for all our rivals or and Athletic. Athletic Club fans. अपने लिए good होगा. I am not that worried about this game. इसमें हराम बॉल खेलेगा क्या? नहीं भाई, इसमें क्यों खेलेगा हराम बॉल? This game तू नहीं बोला जब मौका मिलेगा तब खेलेगा. Arteta will go to Arteta खुद वो बास्क का वो है ना बंदा है, born there. Yeah. Athletic Club, Basque club है. He'll go there. He'll go to his home. It's kind of he's going to his home, and he'll show them good free flowing football. So we're going to have fun overall. मतलब I think even they'll be happy कि हाँ अपना बंदा है. तो मस्त मैच होने वाला है. It'll be fun. Definitely. But कितना contrast है ना, तुम ये देखो. We have scored like 9 goals, considered only 1. They have scored 6 goals and considered 4. हाँ. So it can be said. Exactly. It can be said they can easily get penetrated. और आर्सेनल ने अब तक सिर्फ एक ही गोल खाया, वो भी क्या गोल था यार. Like I don't think that could have been saved, right? I think No, I know, but that's the beauty of the Arsenal. अब मैंने उस दिन भी यही कहा था. You're saying it could have been saved? Could not have been saved. Right. Could not have been. That's why I said. मैंने उस टाइम भी उस मैच के बाद भी यही कह रहा था. I guess मैंने WhatsApp ग्रुप्स में भी यही कहा कि if Arsenal is going to lose a match, make sure it has to be that wonder goal. It has to be some sort of magic. It has to be some sort of individual brilliance. Yep. Because हमारा defensive is stacked, right? We are doing the best in defense for the past 2-3 seasons. I think it's not easy to break our defenses. It can be easier for other teams to to block our attackers, but Arsenal को defense को penetrate करना is not going to be an easy task, especially for a club like Atletico Club. I mean, they have decent players. Like so the rotation I was talking about today, Neco Williams didn't play. No, so, UCL night fever, I think he'll definitely be back, and they have a decent team. I wouldn't say they have a bad team. Athletic Bilbao, पर वो like it's not the same stature, अभी यूरोपा लीग फिक्सचर चल रहा होता है, आर्सेनल अभी 4 साल पुराने वाली होती, तो हम बोलते हैं हाँ कि ठीक है क्लोज हो जाएगा गेम, क्योंकि we played them अभी वो प्री सीजन फ्रेंडली में भी ना, we won 3-0.
तो Yeah, आई थिंक easily. our team should just carry the confidence from that game और अपना फुटबॉल खेलो. You don't have to change anything in terms of tactics or anything. Play your own football, go there, have fun, and 50-60 मिनट में 2 गोल मार के गेम खत्म करो. Give youngsters some endowment को UCL debut दो, बढ़ो आगे. That's my thinking. I probably am यार sounding so overconfident right now, but that's what I'm I, thinking. I was about to say viewers would have been would be spamming our comment section. If not comment section, our phones will be spammed कि भाई तुम क्या बकचोदी करके आए हो नहीं क्या नहीं बोल के नहीं आए यार, गए तुम नहीं यार. एक ही मैच जीते हो तुम लोग चिल करो भाई 4 में से 3 मैच जीते हैं और एक हारे हैं, वो भी बहुत ही खतरनाक लिवरपूल गोल से. shows तो lies tunnel goal. तो literally, and I think we kind of lost that game because of Arteta's tactics too and his lineup selection. But वो then गया ही ड्रॉ but then करने you के can लिए था. also बट आप फिर ये भी सोचो ना कि आर्ने स्लॉट ने भी डिफेंडेड दैट थिंग ही सेड अगर ये मैच 10 बार खेलेंगे 8 बार ड्रॉ होगा एक बार लिवरपूल जीतेगी और एक बार आर्सेनल और वो भी कब जब कोई एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस होगा किसी प्लेयर का देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ मैजिक जो सो आई स्लॉट गेस ने वो बात बोली है ना, स्लॉट भी थोड़ा कमीना आदमी है, वो सीधे सीधे बातें नहीं बोलता. और जिसने वो बात बोली है ना, वो हाँ he said that क्योंकि he knew he cannot break down Arsenal. He cannot. And if Arsenal played that game थोड़ा attacking ना, we would have दे gone वुड and हैव वॉन दैट past them. We would have got 1 goal, 2 goal, 3 goal. वो we were just not set up in the way that I would have liked. But that's well just Arteta. well वो most of the frustrating. fans would have preferred a more attacking lineup than playing those three sort of DMs I would say Yeah, वो but थोड़ा yeah frustrating what's है but Arteta. but but let's but ठीक है यार bygones be bygones let's not talk about our Yep, past yep, just yep. like we don't talk about our exes let's talk about our presents let's talk about the next match that we're going to play हाँ. against Atletico Bilbao Club as you have mentioned Nico Williams was absent yesterday well not yesterday well it would be yesterday because अब 2 बज रहे हैं अभी से ठीक है 4 घंटे पहले. इस 4 घंटे पहले राइट तो निको विलियम्स डिडंट प्लेड ऑफ कोर्स यूसीएल के थॉट्स होंगे एर्नेस्टो वेलवेट के दिमाग में उनके जितने भी टॉप स्कोरर्स हैं हमने ही आई गेस देयर वर लाइक 5 players who have scored a single goal so again a similar pattern of a Basque manager अपने गोल्स को स्प्रेड आउट करो वही की काम एर्नेस्टो वेलवेट ने भी किया रोबर्टो नवारो निको विलियम्स even Inaki they have scored a single goal apiece I guess we could see good attacking lineup against them but we also have to make sure that who we are playing against we are going to play against Paredes and Unai Simon now Unai Simon is a terrific goalkeeper a Oh, he's a Spanish good goal. Yep, goalkeeper of yep. course yeah and I think he does starts for the Spain right He starts over Raya for Spain. वो yeah वही ना, जब वो डिबेट आती है ना, जब we did that on the podcast तो जो राया uh-huh. एलिसन वाली, तो Uh-huh. एलिसन benches Ederson for Brazil, but Raya gets Yeah. benched by Simon for Spain. And that वो भी मेरा इसलिए वो भी रीजन है. राया अपने में बहुत ग्रेट है भाई, like he's probably in our recent history is our Finest best goalkeeper that we have yeah हाँ, but he gets benched by Simon. तो I think it also depends upon कि यार आपके गोलकीपर के साथ आपके डिफेंडर से केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है yeah, and I think Unai Simon has cemented its chemistry with his Spanish center backs or rather the entire defensive lineup maybe that's why Spanish coach prefers yeah, Simon over Raya but yeah. I believe after this season the story will be different we will That's what I'm see hoping to. Raya yeah so yeah अभी हम बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं थोड़ा मोर अटैकिंग लाइनअप शो करें Arsenal. So let's talk about the predicted attacking lineup that Arsenal will be playing with. Yep. So भाई मैंने हम लोगों ने ये पहले ही क्रिएट करके रखा हुआ था पहले मैं से बता रहा हूँ पहले से रखा हुआ था भाई देखो प्रिपरेशन पूरी है हमारी ठीक है ना चाहे रात को 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो प्रिपरेशन पूरी कर रखी है हम लोगों ने तो या so this is our predicted lineup guys Raya will start of course Timber भाई consistent performer है I don't Yeah. think जब बेंजामिन व्हाइट वाज प्लेइंग राइट इट्स लाइक इससे बढ़िया राइट बैक तो हो नहीं सकता ना जो वो डार्क पास He was करता है really good. Yeah. जो वो उंगली करता था जो वो एंड स्पाइट एंड रिमेंबर व्हेन व्हाइट वाज प्लेइंग साका वाज थ्राइविंग हाँ. ही वाज थ्राइविंग उनका केमिस्ट्री साथ में it was so good. Both हाँ of them एग्जैक्टली together. तो उसको रिप्लेस करना वाज बियॉन्ड एनीवन
But then Yeah. came Julian Timber from Ajax, and he was like, "No, this position is mine. You have to earn it from me. It's not the other way around, buddy. Is you're going to earn it from me." So yeah, Yeah. Julian वो हर Timber is going to पोजीशन पे play, हर पोजीशन पे कंपटीशन हो गया यार अब. And and you I know, think that's a good thing. It's a yeah, good and thing. moving on to Mosquera, My like God, what if Saliba is out for another 5 weeks? Mosquera plays I every don't game. think. And what if I Saliba don't has think to fight for his spot? I'm just kidding. I'm just kidding. that too from Christian Mosquera. Christian Mosquera. Anyway, But because so yep, this yeah, is our pretty lineup. Raya obviously keeps his place. Timber keeps White out because मतलब I want Timber to start क्योंकि अच्छा flow में चल रहा है and Mhm. पहला game है तो start with a win, put in a decent lineup. I'm not Yeah, saying White yeah. is not decent, पर चला के रखो. फिर and also Ask मत लेकिन another thing to notice, Mosquera he still doesn't know English. Or I don't know if you want Zubimendi as well. He doesn't know English. no, no, he So, isn't. Zeman so I definitely think doesn't. वो भी थोड़ा I think you have to be careful there too. वो communication side में. So Yeah, that's I think वो Mosquera. I don't know but if यहाँ Timber knows Spanish, but यहीं पे Raya for sure यहीं पे definitely knows Spanish. Gabriel, Raya, or I would say Rice, I probably they come in handy. Because obviously there's a language barrier. You would need a player in around you जो वो language speak कर सकता है. ठीक है. Gabriel definitely knows Spanish, definitely Oh knows yeah. Portuguese, definitely knows English, so he's good with Mosquera. Raya, Timber knows very well each other. Now when we have Zubimendi को I don't think he needs communication. He's like मैं बस बॉल डाल रहा हूँ तुम पीछे भागो. ठीक है. मुझे मत And, सिखाओ. and मतलब football की बात करो, I think in some key moments you need वो communication पर Yeah. मतलब verbal communication पर I think hand signs and उससे भी बहुत कुछ चलता ही है. हो जाता है. एंड अभी ये these are like not 15-year-olds, right? These are हाँ professional players. वही. ठीक है. They know कि अगर हम इस फॉर्मेशन में खेल रहे हैं, this is the setup. इस moment of time पे we have to score a goal. We are creating a build up. Mhm. So I know certain player is going to be in front of me. Yep. I don't need a proper communication. I just need a sign, a call back. Mhm. ठीक है. It could be like Piero. It could be like his name. It could be his number. Could be anything. Yeah. Just a sign is signed, and the communication gap will get resolved. So yeah, Mhm. Zubimendi of course Zubimendi will be played. जिसे मैंने पहले किया था पुराने चावल को वापस लाया जाएगा. Declan Rice is going to Like come back into his वो place. वही मैंने बोला ना like राइस को कैसे बेंच कर सकते हो यार. Yeah, yeah, But I yeah. think Marino got his game today. He'll be happy. He got his game time. He- for Before sure, for moving sure. on, before moving on, जो कैलाफ्योरी का जो पड़ा है वहाँ पे, जो नाम लिखा है वहाँ पे, I want MLS to start. Ritesh thinks कैलाफ्योरी को I know. मिलेगा फिर से. But I think MLS और का भी same situation है वो मरीनो वाला. Like Yeah. he's only 18, yes, but he would be knocking on the door. कि भाई, you saw me last He's season. already Calafiori was already there. injured. I carried this position. So you can't just bench me until I play really bad. So I think I am hoping MLS gets his start. क्योंकि it's Athletic Bilbao. अभी Bayern होती, Inter Athletic होती, मैं बोलूँगा ठीक है, Calafiori को फ्लो चलने दो. But I'm hoping and I would like to see MLS But start. don't you think like you would want to bring MLS when you want control in the midfield and extra player in the midfield? Because obviously we know MLS is not your traditional left back. जो बस it will bomb down the wings, right? पर वो तो He would. Calafiori भी नहीं है ना. Like they're both different. It's just हाँ, but I think see what I think about it is it's against Bilbao. They are not that good of a team. Bayern Munich. They are not that good of a team. So we don't have Yeah. to think about player role so much. Mhm. Arsenal by default is probably going to control that game. So Probably. just give your players who deserve the game time, just give them game time. That's how I think about it. मतलब we don't have to इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि भाई यहाँ पे ऐसा होगा वहाँ पे ऐसा होगा. We just our players individually and collectively are just better. तो just chance दो भाई, क्योंकि 4 गेम हो गए सीजन के. MLS hasn't started and last He's season not. game खेल रहा है. तो you But then बात वहीं आ जाती है ना. It's like Arsene Wenger बोलते था ना कि if something is not broken, why change it? Why replace it? यार Right. So नेक्स्ट मैच Calafiori is doing सिटी really अगेंस्ट well. है, उसके बाद नेक्स्ट मैच सिटी अगेंस्ट भी है, तो थोड़ा घुमाओ यार. एज अ फैन टू हाँ. आई वांट टू सी MLS. I want to see that kid play. Let's see. But this is our prediction. That is our prediction that Calafiori will start because he's been doing really well for the past 4 games.
And of course, Zubimendi and Rice will start. हाँ, But now let's talk about the number 10 position. Well, when I say number 10 position, not the number 10 player, right? So we had Odegaard, of course. We would wanted him to, play, but the back-to-back, injuries on his right shoulder has put us even in doubt. It's just a bit of a skepticism, थोड़ा doubt है कि वो start हाँ, करेगा and नहीं करेगा. there's no, why would you risk him? Don't risk him. You have enough. Of course, We saw today. that We saw today. We yeah. didn't need him. 18 मिनट के बाद वो गया. Elmaneri came on. We were fine. So why would you risk him? But would you play Anwaneri over Eze against Bilbao? Would you? मैं अपना बोलूँ तो yes, Elmaneri plays there. Martinelli रखो Okay. भी bench पे. Let Martinelli suffer a bit more. वो जो game time की बात कर रहे थे ना. I want to see जो Martinelli performance दिया last season. I want to see him suffer a bit more कि उसको थोड़ा लगे भाई कि अच्छा MLS को नहीं खिलाया अभी तक, अब खिला दिया. मेरे को अभी भी नहीं खिला रहा है, तो वो थोड़ा he needs the चिंगारी थोड़ा कि Right. अच्छा तो then I need to. But I guess this is the reason why I discuss कि Martinelli start करेगा. Again, because Like it's I don't Athletic have any Bilbao. issues. Start him, and this is if he starts, he has to get at least a goal or an assist. He has to, yeah. नहीं आता Yeah. तो जैसा भी Performance अच्छी होनी चाहिए भाई. हाँ, जो भी मेरे हिसाब से मधुके तो कर रहा he है ना, has to put in a performance. हाँ, जो मधुके ने अभी लास्ट दो गेम में किया है वैसा कुछ कर दे, so that it at least it looks like okay, you deserve a spot, you deserve It would be justified, no, to start him then. Wait. But overall, So I agree with this lineup. बढ़िया है, चलो. And again, I've been saying throughout, competition नहीं है उतना, चलने दो. definitely, So and I think just this around- lineup is good enough to beat Atletico Bilbao. Oh yeah. Yeah. I think, right. So let's end this conversation with the last segment. Score line क्या होगी and who's going to be the scorers? What's going to be the score line? Yeah, it's going to be Atletico Bilbao against Arsenal. By the way, it's an away match, guys. So Yeah. don't be overconfident with the I fact think- that Arsenal has been doing really well at We win Emirates. 0-2. That's what I'll go for. 0-2. 0-2. Okay, Yeah. so of course, They of won't course, score. no one's We going are to. just too good defensively. और Mhm. हराम बॉल हल्का सा तो चलेगा, ये मेरे को पता है. We probably set piece से गोल आएगा और एक और आ ही जाएगा, maybe on a counter. And then Who do you think will be scoring those 2 goals? corner का I can't say, but I think Gyökeres scores this game. Scores. The mass celebration will be up once again. But yeah. All right, guys. So thank you for joining in. This was our very first episode of Yep. UCL Nights with Ball Baja Barat. Of course, this is just the start. मैं और राहुल बने रहेंगे. हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़ेंगे. So don't be bored. हमारे चेहरे देख के बोर नहीं हो गए आप. Don't you worry about that. We'll bring in a lot of new content on YouTube and of course हमारा podcast चालू है ही Spotify पे. So go out, like, share and finally subscribe to our channel Ball Baja Barat. See you guys. Yep, thank you very much for watching. Very excited. First episode. रितेश ने बोला है तो मैं भी थोड़ा बोल देता हूँ. First episode, and finally like, share and subscribe. Thank you for listening. Thank you for listening, guys. See you.